Hello viewers and learners, most welcome on the channel वशिष्ठा मैथमेटिक्स। आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर हैं जो एडवांस 2022 के आईटी एडवांस 2022 पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं और इसी क्रम में हम लोग लगातार प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करते रहेंगे और आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, दो तीन क्वेश्चंस करके मैं पर डे डालूंगा ताकि वीडियोस ज़्यादा बड़े ना हो और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होती रहे। एक से ज़्यादा क्वेश्चन डालने पे प्रैक्टिस में भी कमी हो सकती है और साथ ही साथ वीडियोस लंबे होने के भी चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ एडवांस के साथ साथ एक और समय में किसी समय में मेंस के भी क्वेश्चंस साथ साथ चलेंगे, बट वो दूसरे वीडियोस में होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को जो 2022 के पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF, द वैल्यू ऑफ 3/2 cos inverse square root of 2/2 plus pi square plus 1/4 sin inverse 2 root 2 pi by 2 plus pi square plus tan inverse root 2 by pi is। तो इस सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे कह रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई पाई है। तो अगर एक ट्रायंगल में हम लोग बात करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर फॉर्मेशन करते हैं तो ये एंगल थीटा, दिस इज आवर पाई and this becomes a square root of 2, then this becomes 2 plus pi square, and the cos theta becomes b by h, that is 2 by 2 plus pi square root. Here this becomes p, this becomes b, and this becomes h. Due to cos inverse I have formed this type of triangle so that base can be written as square root of 2, and as well as in this triangle for this theta, tan theta equal pi by square root of 2, that is we can write theta as cos inverse square root of 2 by 2 plus pi square root of 2 equal tan inverse pi by square root of 2. This is about our cos inverse. Now we are going to talk about sin inverse 2 square root of 2 pi by 2 plus pi square. And this can be written as sin inverse dividing by 2, we can write 2 square root of 2 pi by 2, and this becomes 1 plus pi square by 2, and this can be written as sin inverse 2 root 2, that is pi by root 2 upon 1 plus pi by root 2 whole square. If pi by root 2 is x, this becomes sin inverse 2x by 1 plus x square, which becomes pi minus twice tan inverse pi by root 2, because here x, that is pi by a square root of 2 is greater than 1, and we have sin inverse 2x
by 1 plus x square equal pi minus 2 tan inverse x. The condition applied is x must be greater than 1. For this case, sin inverse can be written in this form. Now, the expression becomes, now we can write 3 by 2 cos inverse. This can be written as tan inverse pi by root 2, pi by square root of 2, plus the value of sin inverse can be written as 1 by 4 and pi minus 2 tan inverse pi by root 2, and last term becomes tan inverse root 2 by pi. Tan inverse root 2 by pi. This becomes 3 by 2 tan inverse pi by root 2 plus pi by 4 minus 1 by 2 tan inverse pi by root 2, and this can be written as cot inverse pi by root 2. सब सारे वैल्यू पाई बाई रूट 2 के रूप में हो गए. अब now tan inverse pi by root 2 taken as common, then it can be written as 3 by 2 minus 1 by 2 tan inverse pi by root 2 plus cot inverse pi by root 2 and plus pi by 4. This becomes 3 minus 1, 2 by 2 becomes 1, and this becomes tan inverse pi by square root of 2 plus cot inverse pi by square root of 2 plus pi by 4, and this becomes your pi by 2. Pi by 2 plus pi by 4, which becomes 3 pi by 4. 3 into 3.14 by 4, 4 सते 28, 3 4 अठे 32, 4 पंचे 20, दैट इज 3 पचे 15, 3 अठे 24, 1 25, 3 सते 21, 1 22. दैट इज द वैल्यू इज 3 पचे 15 की 5 हाथ में 1, 3 अठे 24, 1 25 की 5 हाथ में 2, 3 सते 21, 2 23, 2.35, and the value is your 2.35. This is the answer of the given question. ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है सारे का, उसके थ्रू बनाया है. आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा. आए अगले क्वेश्चन में देखें. लेट अल्फा बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, दैट इज अल्फा जो है वो बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल, और एक फंक्शन है एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड जी फ्रॉम अल्फा टू इंफिनिटी, बी जी अल्फा टू इंफिनिटी टू रियल, be the functions fx given fx equal sine of pi x by 12 and g of x is given as twice log base e
square root of x minus square root of alpha by log base e to the square root of x power e to the power square root of alpha. To find, हमें निकालना क्या है? To find limit x tend to alpha plus f of gx. That is, we have to find limit x tend to alpha plus f of gx means sine pi by 12 of g of x. यानी हमें gx की वैल्यू चाहिए. For this, also the limit will hold for gx. That is, we have to find limit x tend to alpha plus gx. Therefore, limit x tend to alpha plus gx. And the value of gx is limit x tend to alpha plus twice log base e square root of x square root of alpha by log base e square root of x minus e root square root of alpha. At x tend to alpha plus ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म, यानी कि लैप्टल रूल हम लोग यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज लैप्टल रूल. लैप्टल रूल में तब तक हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब तक कि 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म खत्म ना हो जाए. तो 2 कॉमन निकाल लिया बाहर. x टेंड टू अल्फा प्लस कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ln x 1 by x minus 1 by alpha, differentiation of root x 1 by 2 root x, alpha becomes 0. Again, differentiation of log 1 upon e to the power square root of x minus e to the power square root of alpha, e to the power square root of x, e to the power square root of x 1 by 2 root x. This becomes cancel out. ये ऊपर चला गया, यानी ट्वाइस लिमिट x टेंड टू अल्फा प्लस e to the power square root of x minus e to the power square root of alpha by square root of x minus square root of alpha into 1 by e to the power square root of x. This becomes at alpha plus, this becomes 0 by 0. Again, at x tend to alpha plus, this becomes alpha plus alpha, that is twice by e to the power root alpha bar. Again differentiating, limit x tend to alpha plus e to the power square root of x minus e to the power square root of x and square root of x 1 by 2 root x minus alpha constant 0 square root of x 1 by 2 square root of x minus alpha becomes 0, 1 by 2 root x cancel, that is this becomes 2 upon e to the power square root of alpha, and at alpha it becomes e to the power square root of alpha, it is becomes 2. That is the value of gx becomes 2. We can say the value of gx is 2. Therefore, limit x tend to alpha plus f of g of x
the limit x tend to alpha plus the value of gx becomes 2, that is, this is f of 2, and fx is given as sin pi by 12, and the value of x is 2, this becomes sin pi by 6, this is your 1 by 2, and the value is 0.5. This is the final answer of the given question, that is, the value of this is 0.5 and the value of this is 2. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you. Hope you will understood all the steps. अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियोस आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे।